Hello everyone. Hello Bhargavi. I hope I'm audible. Just let me know if I'm audible properly. Let me know in the chat window itself if I'm audible properly. Okay, let us right away start with the lecture. I hope all of you have joined. So let me start with the next topic for today, that is addressing modes of 8051. So let us see what exactly addressing modes are. Now, what for it is used? Addressing modes are used to access data. Now, the data which is accessed can be done in various ways. So the addressing mode refers to accessing data. So using addressing mode, what we are doing, we are going to access the data. Okay. Now see how many addressing modes are there. There is a first mode, that is immediate addressing mode. Second one is registered addressing mode. Third is direct addressing mode. Fourth is register indirect addressing mode, and fifth one which we are going to study is indexed addressing mode. Out of which these three modes here, you can say direct, indirect, register and index, they are used for accessing memory. Now the data is stored in the memory, and that data, if you want to access, these three modes are going to be used. Now before going to the modes, let me give you an example from where, like, if you take that example, you will be able to understand these modes better. Now the example which I'm going to give is of the restaurant. Okay. Now you go to the restaurant. Suppose this is you who wants to go to restaurant and have a good meal. But problem is restaurant is in China. So you're not able to read anything, whatever written there. Right? Suppose now if you go to the restaurant and if you want to eat something, you may be knowing names of few dishes. है ना? कुछ डिशेस का आपको नाम पता रहेगा. लाइक इंडिया में हमको चाइनीज डिशेस मिलते हैं, तो आपको सपोज कुंग पाव राइस और समथिंग लाइक दैट, अगर आपको नाम पता है तो आप जाओगे रेस्टोरेंट में और वहां पे जो वेटर रहेगा, उस वेटर को डायरेक्टली बोलोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर डिश चाहिए. तो आपने बोल दिया उसको कि आपको जो खाना है वो डिश है, जो डिश का नाम ये है. आप सपोज आपने कुछ राइस का नाम बोल दिया, कुंपाव राइस वगैरह, तो आपने वेटर को बोल दिया कि आपको ये डिश खाना है. तो ये हो गया आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. यहाँ पे डेटा क्या है? डेटा है जो डिश आप खाना चाहते हैं, जो फूड आप खाना चाहते हैं, उसका नाम है डेटा. मतलब वो है डेटा. तो आपने डेटा को कैसे एड्रेस किया? वेटर को कैसे बोला कि आपको क्या खाना है? आपने डायरेक्टली नाम लेके बोला कि मुझे ये डिश खाना है, तो मतलब ये हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. नाउ सपोज आपको वो वैसे नहीं एड्रेस करना है डेटा, तो आपको सपोज वहां पे उस रेस्टोरेंट में कुछ बाउल्स रखे हैं. ओके, दीज आर द बाउल्स. डिस्प्ले पे बाउल्स रखे हैं, और उस बाउल्स में डिस्प्ले में, जैसे आप मॉल में जाते हो तो वहां पे रेस्टोरेंट जो रहते हैं, वहां पे जो फूड मॉल रहता है, फूड कोर्ट रहता है, वहां पे एक डिस्प्ले पे डिशेस रखे रहते हैं. तो आप बोलते हो कि मुझे ये डिश चाहिए, उस बाउल में जो डिश रखा है ये डिश चाहिए. मतलब आपने डेटा को कैसे रेफर किया? आपने डिश के जरिए, जिस डिश में बाउल में वो आपको जो खाना है वो रखा हुआ है, जो चीज खानी है वो रखी हुई है, वो डिश मतलब आपका रजिस्टर हो गया. मतलब डेटा कहाँ है? रजिस्टर में.
खाने वाली जो खाना खाना है वो कहाँ पे है, डिश में। ओके, सो दैट इज हो गया ये, दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। बाद में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप मेनू कार्ड लेते हो, रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड रहता है, राइट, और मेनू कार्ड में नंबर रहता है 1 2 3 4 5, और उस नंबर के आगे जो खाना है उसका नाम लिखा रहता है। तो आपको कुछ पढ़ने को तो आ नहीं रहा है, आपने बोल दिया मुझे ये 3 नंबर पे जो भी लिखा है वो लेके आओ, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब आपने एड्रेस बोल दिया, उस एड्रेस में जो लिखा हुआ है वो लेके आओ। तो एड्रेस बोल दिया। बाद में कभी कभी आप क्या करते हो, आप आजू बाजू में देखते हो, बाजू वाले टेबल पे एक इंसान खाना खा रहा रहता है, तो आप क्या बोलते हो, वो जो खाना खा रहा है वो खाना लेके आओ। मतलब वो इंसान बाउल में से खाना खा रहा है, आपने जो ना डिश का नाम लिया, ना वो रजिस्टर का नाम लिया, मतलब बाउल की ओर इशारा किया, आपने क्या बोला कि वो इंसान जो खाना खा रहा है वो लेके आओ, मुझे वो मुझे चाहिए। मतलब दैट इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ एड्रेसिंग, राइट। तो ये थोड़ा आप समझ लेना, जैसे एनालॉजी, ये एनालॉजी है डिफरेंट मोड्स की। हम डेटा के जरिए ये जो पांचों मोड है वो वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, नाउ लुक एट द slide over here. Now, immediate addressing mode में data must be preceded by the pound sign, that is this sign. Remember this. Immediate addressing mode, जहां पे आप hash लिखते हो, तो that means that is immediate addressing mode. आप directly dish का नाम ले रहे हो, आप directly data दे रहे हो। Now, immediate addressing mode अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। Now, these are the examples of writing immediate addressing mode. Look at this, MOV A comma hash 25. So here, what you are doing, you are transferring immediate data 25 to the accumulator. Then, the second instruction is MOV R4 hash 62. Here, what you are doing, you are saving or you're transferring number 22 in the register. Initially it was accumulator, now it is a register. Take for the third example. In third example, move B hash 40. तो यहाँ पे क्या किया आपने, डेटा 40 आपने मूव किया, कहाँ पे मूव किया, बी रजिस्टर में मूव किया। Similarly, say DPTR. DPTR is data pointer, right? It is used for accessing external ROM and RAM. DTPR, DPTR. Data pointer is a 16-bit register. So you have transferred this 16-bit number, X number in DPTR. So DPTR consists of DPL and DPH. There are two registers, DPH, DPL and DPH. DPTR is 16-bit, but you can use them in a 8-bit format and transfer separately. Like ये lower byte data जो था 21, that you can transfer to DPL, and higher byte data ये जो है इधर दिखाया हुआ है, और ये 45 यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप सेपरेटली ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हो डेटा, इमीडिएट डेटा, या फिर यहाँ पे जैसे दिखाया वैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, सो वैल्यूज ग्रेटर देन 65,535 are illegal. Obviously, the maximum number is FFFF, so that is illegal. Above that, everything is illegal. Okay, so I hope you have understood this properly. Immediate addressing mode.
आप जब भी इस टाइप में डेटा आप ट्रांसफर करोगे तो उसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहा जाता है. I hope you have understood it very clearly. Moving on. Now, EQU. EQU is assembler directive. We have studied different assembler directives. Now, EQU here is assembler directive. Now, here EQU assigns the number 30 to the variable called count. Count is a label, you can say. And to this label, the number 20 gets assigned. Equate. Okay. So whenever in the program you want to transfer 30 to any of the register, you simply say hash count. Hash indicates it's the immediate data, and when you say hash count, number 30 will get transferred to R4. Okay. Similarly, you can see over here the the, the data over here can also be transferred to DPTR. That is America. The word America, which is stored as a ASCII value, that can also be transferred to DPTR. DPTR मतलब 100 है. उस 100 लोकेशन में आपने ये डेटा मतलब अमेरिका ASCII कोड ट्रांसफर करके रखा है. तो आप जब ऐसे माई डेटा लिखते हो तो माई डेटा is written at 100 location. So when you write this dptr comma hash my data, this 100 address 100 gets transferred to dptr. Okay, so dptr is initialized to a location where this number, where this data is stored. Remember this. This ASCII value America would not go directly to DPTR. DPTR is data pointer. It will be pointing address. So the address where this data is stored, which is labeled with my data, that address gets stored. Okay. So this address 200 gets stored in DPTR. And then using DPTR, you can access it later on. So it can also be used to send data to the port. So this is the instruction. Now you can directly send data to port as well. It's not that you send data only to the register, but आप ports को भी data भेज सकते हो immediate addressing mode use करके. ठीक है? Now we will move on to the next addressing mode, that is register addressing mode. In register addressing mode, registers are used to hold data. See, immediate data नहीं दिया जाएगा, डेटा रहेगा रजिस्टर में और रजिस्टर का डेटा एक्सेस किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस इंस्ट्रक्शन, मूव a कॉमा R0. यहाँ पे क्या हो रहा है, R0 में जो डेटा है वो जा रहा है एक्यूमुलेटर में. तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट मूव R0 कॉमा hash 50h इंस्ट्रक्शन से. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर राइटिंग दिस, तो डेटा आपने कहां पे स्टोर किया, ये 50 ये जो नंबर है आपने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज करके R0 में पहले से सेव करके रखा है, और फिर आप लिख रहे हो मूव a R0, मतलब ये R0 में जो 50 ऑलरेडी आपने स्टोर करके रखा है वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करो. तो मूव R2 A का डेटा R2 में भेजो, R5 का डेटा A में भेजो.
R7 का डेटा A में भेजो, A का डेटा R6 में भेजो। सो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रजिस्टर्स है। और एक बात ध्यान में रखना है आपको कि सोर्स और डेस्टिनेशन जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, दे मस्ट बी ऑफ सेम साइज। अगर साइज बिफर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सोर्स का साइज है वही डेस्टिनेशन का साइज रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपने मूव डीपीटीआर कॉमा ए लिखा तो ये गलत है, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? ए का साइज 8 बिट है, डीपीटीआर का साइज 16 बिट है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये भी इनवैलिड है। R4 कॉमा R7 एक रजिस्टर से डेटा उठा के दूसरे रजिस्टर में आपने डाला तो भी वो इनवैलिड है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ऊपर जो मैंने बोला वो भी नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? एक का साइज अलग है, डीपीटीआर का साइज है, और ये रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर भी डायरेक्टली नहीं होता है, वो एक्यूमुलेटर के थ्रू ही करना पड़ता है। So this is register addressing mode, ठीक है। Now next is your how to access memory. So we are going to see direct addressing mode here. दो मोड हमने देखे, एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड देखा जो हैश लिख के होता है, दूसरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड देखा जो डेटा रजिस्टर में रहता है और फिर वहां से ट्रांसफर किया जाता है। अब हम तीन मोड जो देखने वाले हैं वो तीन मोड मेमोरी एक्सेस के लिए यूज होते हैं। तो पहला है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इफ यू कुड रिकॉल आवर एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट, तो उसमें हम लोग ने जो डिश खाना है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जब मैंने एग्जांपल दिया था तो आपने मेन्यू कार्ड पे जो नंबर पे डिश है वो नंबर बोला था और नंबर से एड्रेस किया था उस डिश को। तो यही एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसी को बोलते हैं। जो अपना मेमोरी है 128 बाइट का रैम है, that memory you can access by using direct addressing mode. Okay, register bank locations are also can be accessed by using the address. Now for example, now you look at this. Now for that you need to know, recall मैंने जो आपको सिखाया था रैम का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। रैम का स्ट्रक्चर याद करो, 128 बाइट। तो पहले तो रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, 2, फिर आता है आपका बिट एड्रेसेबल मेमोरी, फिर आता है आपका स्क्रैच पैड मेमोरी यहाँ पे, राइट। तो 32 7F, ये 7F है, ये 30 है, तो ऐसे आपको मेमोरी मिलता है 002 7F और आगे जाके 802 FF करके, तो टोटल 128 बाइट हो जाता है। नाउ रिमेंबर एवरी लोकेशन हैज गॉट द एड्रेस। RB1 RB0 जो है उसका एड्रेस होता है 0 से 7 ना, 0 1 2 3 4 and so on. So every register has got the address. So RB0 रजिस्टर बैंक 0 का एड्रेस होता है 0 to 7, फिर 8 से चालू होता है, फिर वो आगे जाता है, ऐसे करके एवरी रजिस्टर हैज गॉट इट्स एड्रेस। सो राइटिंग move A,4 is same as writing move A,R4. Now R4 का एड्रेस जो है वो 4 है, R4 का एड्रेस 4 है। तो मैं एड्रेस लिखता हूं और वहां पे देखो, जब मैं एड्रेस लिखता हूं, पे अटेंशन, मैंने कोई हैश नहीं लगाया, कुछ हैश वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्टली A,4। तो जब भी आपको मूव A,4 ऐसे दिखता है तो समझ जाना ये 4 जो है वो एड्रेस ऑफ रैम है, ये 4 जो है वो एड्रेस है। मुझे मत बताना कि 4 नंबर 4 एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होगा, नहीं, ये 4 जो है
that is address. Okay, remember this. If you see hash here, then it is a number, immediate number. But without hash, without any symbol just before this number, then it is simply an address. Okay, वही एक आगे लिया उन्होंने, देखो यहाँ पे भी देखो, मूव R0, 40। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 40 नंबर R0 में जाएगा, इसका मतलब है कंटेंट ऑफ memory address 40 will be transferred to R0. So that is it. And again, if you have any doubt, I'm just following the chat also. So if you have any doubt, can ask me in between on the chat, and I will explain it there and there itself. There's a slight delay, but it's okay. Like the moment I see your question, I'll be taking it. Okay? So this is direct addressing mode. Now you know there are SFRs. मतलब 7F तक तो आपका रैम हो गया जो यूजर को है अवेलेबल, और 7F के आगे का है वो SFR एरिया हो जाता है. SFR stands for स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स. ओके, तो वो जो रैम है that can also be addressed by their memory address. For example, you look at this instruction. Move 0E0, comma, hash 55. Now you must be wondering what is 0E0. You have to ignore 0 because whenever your opcode or operand starts with the letter, we write 0 before that. ये जो 0 लिखा है उसको इग्नोर करो, ये 0. Okay. So it is move E0 H, hash 55. मतलब 55 डेटा जो है वो इस एड्रेस पे जाएगा, और ये एड्रेस है एक्यूमुलेटर का. अब तक हम एक्यूमुलेटर को ए करके लिख रहे थे, अब एक्यूमुलेटर का एड्रेस दे दिया क्योंकि वो एक्यूमुलेटर इटसेल्फ इज अ एसएफआर. तो आपको, हम लोग ज्यादातर लिखते नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह से एड्रेस करना होगा तो आप कर सकते हो. बी रजिस्टर देखो, F0 ये जो एड्रेस है ये बी रजिस्टर का है, तो R0 का कंटेंट आप लेके जा रहे हो एड्रेस में B0. तो ये आपका होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो मैंने जैसे बोला था आपको, SFR का एड्रेस 80 से चालू होता है, यहाँ पे देखो, और FF तक जाता है ना. तो ये 128 बाइट रैम जो है आपका कंप्लीट हो गया. Now just for your reference, these are the addresses which are given SFR. You don't have to remember all these addresses. Whenever you are writing a program, these addresses you can refer. But just remember, these are the addresses. Okay. Port 0, port 1, port 2, port 3 के लिए जो लैचेस है उसके एड्रेसेस याद हम में रखना इजी है. देखो P0 80 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, और फिर 90, ये 10. देखो कैसे डिफरेंस है, 80, 90, A0, B0 सीक्वेंस में सारे पोर्ट्स के. लेकिन बाकी के ध्यान में रखना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, बट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में वी डोंट आस्क व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस रजिस्टर, दैट रजिस्टर. ओके. सिमिलरली tmod, tcon. Now t2con, don't get confused. This register we do not have in 8051. Okay, 8052 में आपको है, या फिर आप जो माइक्रो कंट्रोलर का किट यूज कर रहे हो उसमें भी ये रजिस्टर्स आपको मिलेंगे. वहां पे तो 3 टाइमर है. न्यूटन का जो आईसी है उसमें 3 टाइमर है. सिमिलरली 8051 में आपको, टिपिकल 8051 में ये भी नहीं मिलेगा आपको कैप्चर रजिस्टर्स वगैरह. बाकी टीकॉन, एसकॉन, एसबॉब ये मैंने क्लास में लिए थे, हमने देखे थे. इन शॉर्ट आपने देखे थे कि क्या क्या करते हैं ये रजिस्टर्स. नाउ here is the example. Write a code to send 55H to port P1 and P2.
So 55, here it is 55 data. It is stored in accumulator, and from there it has stored in P1 and P2. Okay. Here there is the important thing which you should always note down. Only direct addressing mode is allowed for pushing and popping. Pushing and popping. Now you have heard this word before, push and pop. It is used in stack memory access. When you want to access stack memory, push and pop instructions are used. So if you write push A, this instruction, this is invalid because you are not supposed to use register whenever you are pushing or popping data on a stack. Register in the sense directly register addressing नहीं कर सकते आप. आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एड्रेसिंग करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यू राइट पुश E0, मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट आप स्टैक पे डालना चाहते हो. तो पहले अब मैंने एक एग्जांपल लिया था. ओके, पुश 4, पुश 5, पुश 6, मतलब 4 मतलब रजिस्टर R4, 5 मतलब रजिस्टर R5. सो रजिस्टर का डेटा अगर आपको भेजना है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस. यू कैन सी अ पुश 05, मतलब 5 नंबर का रजिस्टर R5, उसका वैल्यू पुश करना है. So push and pop. Only direct addressing is allowed. Okay. Now, next addressing mode, register indirect addressing mode. So you can check. हमने addressing mode कौन-कौन से देखे इसके पहले? पहला देखा register addressing mode. Second was direct addressing mode, right? पहला वाला immediate addressing mode, then register addressing mode, and third was direct addressing mode. Now the next mode is register indirect addressing mode. Now before we move on, I want all of you to write these names of addressing modes. 3 addressing modes till now we have seen. This is the 4th one we are going to see. So all of you in a comment simply just instead of typing yes sir, hello sir, you type names of these 3 addressing modes which we have studied. I want you to type names of these 3 addressing modes till now which we have studied. Right? So start. I'll wait for your answers. I haven't got any answers till now. You have to start from first. First is not direct addressing mode. First is immediate. Second is indirect. अभी देखा नहीं है, अभी देखने जा रहे हैं श्रुति. First is immediate. Second one is direct. Second one is register. And third one is direct. These 3 we have seen. Yes, Lekha, correct. Direct. Indirect कहाँ पे सीखा? Indirect तो अभी सीखने जा रहे हैं हम लोग. Indirect कहाँ सीखा? Please don't make these mistakes. हमने immediate सीखा, हमने register सीखा, हम लोगों ने direct सीखा. लिखो फिर से. Immediate देखा, register देखा और direct देखा. Others, please write. ठीक है. Now till I get answers from all of this, let me go a little ahead. Register indirect addressing mode. इसमें सबसे important चीज आपको ध्यान में रखना है. Only R1 and R0, these 2 registers we are going to use in this indirect register indirect addressing. And in this mode, a register is used as a pointer to the data.
ओके, पॉइंटर आपको पता है, जैसे डीपीटीआर है, डेटा पॉइंटर है. देन प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ पॉइंटर. वैसे रजिस्टर यहाँ पे यूज होता है एज अ पॉइंटर, डेटा को पॉइंट करने वाला. नाउ आप कहां पे डेटा स्टोर किया हुआ है? डेटा इज लोकेटेड इन रैम, and this data we are going to point by using resistors. Now this resistor and this resistor is going to be used for pointing the data in RAM. Okay. Now ये कैसे पॉसिबल है? सपोज रैम के एड्रेस 50 में, ये रैम है आपका, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको. दिस इज रोम, और रोम के एड्रेस से 40, ये एड्रेस में एक डेटा है. डेटा कोई भी हो सकता है यहाँ पे. डेटा सपोज डेटा है 7F. थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं मैं, बड़ा सा ड्रॉ करता हूं. ये है एड्रेस 40 और इस एड्रेस में डेटा स्टोर्ड है 7F. ओके, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. तो मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये जो डेटा 7F है वो ना तो मैं उस डेटा के एड्रेस से एड्रेस करूंगा, ये भी नहीं यूज करूंगा. मैं यूज करूंगा R0 या R1, ये दो रेजिस्टर, और इस दो रेजिस्टर में या कोई भी एक यूज करूंगा. ऑब्वियसली मैं स्टोर करूंगा 40. मैंने क्या स्टोर किया? 40. बट मुझे डेटा कौन सा लेना है? 7F. ये एक्चुअल डेटा है, बट रजिस्टर में मैंने क्या स्टोर कर लिया? 40. तो 40 is the address. 40 actually is the address. So when I'm going to write such instruction, देखो ये इंस्ट्रक्शन है इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. तो मैंने लिखा move a comma at R0. This symbol at, you have to pay attention. At sign. At sign. The symbol is at. Now when I'm writing at R0, that means it is indirect register, indirect type of instruction. So register at R0 का मतलब ये होता है R0 में जो एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है, वो डेटा निकाल के एक्यूमुलेटर में लेके आओ. ये उसका मीनिंग है. R0 का कंटेंट ए में ट्रांसफर नहीं करनी है. R0 पॉइंट कर रहा है एड्रेस को, और उस मेमोरी एड्रेस में जो डेटा है, दैट डेटा will be transferred. That is why it is called as indirect. It's not direct. We are not giving this address 40 directly. That is in case of direct addressing mode. But this 40 you are addressing by using one register, or either R0 or R1, and you are writing at R0 a comma at R0. That means the number 75, the data will be transferred to A. Remember that very clearly. Okay. Similarly, when you write at R0 comma B, the next instruction you pay attention to. Can you write what will happen when you write R0 comma at R1 comma B?
Can you write what will happen? Please write. Please write in a comment box. अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या, कहां से क्या ट्रांसफर होने वाला है? प्लीज राइट इन अ कमेंट बॉक्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. At R1 comma B, what is going to be transferred and where is going to be transferred? Please write in a comment box fast. Move at R1 comma B. क्या होने वाला है? Sampada is saying from register B transferred to at R1. What is at R1? That is what I am asking you. That is what I am asking you. At R1 मतलब कहां पे जाएगा? B में डेटा R1 में ट्रांसफर होगा? नहीं, गलत. यही तो मैं बोल रहा हूं. एट R1 जब आप लिखते हो तो R1 में डेटा नहीं जाता है. Make it very clear. When you write at R1 comma B, data does not go in the register R1, and that is why it is called as indirect addressing mode. Where it will go? Move content of B. You can read here very clearly. Contents of B into RAM whose address is held by R1. R1 के अंदर, नाउ ये R1 यूज किया यहाँ पे फिर से मेरा एग्जांपल में देखो. ये R1 में आपने स्टोर कर लिया है ऑलरेडी 40. तो 40 इज द एड्रेस. तो बी रजिस्टर में जो भी चीज है वो यहां जाएगी, ये लोकेशन पे जाएगी. So remember this is indirect addressing mode. You have to be very clear. So tomorrow, whenever I'm going to ask you this question, at that time you should be able to explain indirect mode properly. Now you can look at this. ये प्रोग्राम जो है केयरफुली आप देख सकते हो कैसे किया है. इधर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज किया हुआ है. तो इस प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है देखो. ए में अपनी इमीडिएट वैल्यू 55 डाल दिया, फिर 40 इमीडिएट वैल्यू R1 में डाल दिया. अब आप लिख रहे हो मूव एट R0 कॉमा ए में है 55 और R0 मतलब 40. 40 इज द एड्रेस ऑफ द रैम. सो रैम के एड्रेस 40 पे, अगर ये रैम है उसका एड्रेस ये 40 है, तो उस 40 में जाएगा 55 here. So this is what will happen. इंक्रीमेंट R0. R0 इंक्रीमेंट हो गया तो बनेगा 41. ओके 41. तो 41 में आपको वापस ए का कंटेंट मतलब 41 में भी 55 जाएगा. सो दिस इज व्हाट indirect addressing mode is. Please understand. Now all these programs you need to check and see how to transfer 10 bytes of data. See 10 bytes of data. बार बार आपको 10 बाइट है एड्रेस 35 to 16 में स्टोर किया हुआ, वो डेटा आपको ट्रांसफर करना है. तो आप कैसे करोगे? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करके. इट्स शोन ओवर देयर दैट यू हैव टू रेफर. Now here
something that you need to notice. मैंने आपको बोला कि R0 and R1 are the two registers which we are going to use, but these are only 8 bits, right? So R1 and R0 registers are used for only internal RAM, which is from 00 to FF, right? RAM is from 00 to FF. तो 8 बिट रजिस्टर से सिर्फ ये इंटरनल रैम आप कवर कर सकते हैं। एक्सटर्नल रैम अगर है पूरा 64 KB का या रोम ऑन चिप रोम है, we need DPTR, data pointer. Okay, so we should use indirect addressing mode via DPTR. Let us see that. Okay. Now the next addressing mode is indexed addressing mode. पांचवा है indexed addressing mode. Now indexed addressing mode is widely used accessing data elements of lookup table entry. ये remember, lookup table entry located in a ROM. ROM में जब ऐसे 100 या 10 मतलब ऐसे सिक्वेंशियल डेटा दिया गया है और उस डेटा को लुकअप टेबल हम लोग बोलते हैं, तो उस डेटा को उस लुकअप टेबल में जो डेटा स्टोर हुआ है उस डेटा को जब एक्सेस करना है तो आपको यूज करना पड़ता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. ओके, नाउ दिस इज फॉर ROM, accessing ROM, and that is why the instruction which is used for that is move C. It's not simple move, it is move C. C stands for code. कोड मतलब ROM. तो यहां पे क्या है, मूव सी ए कॉमा, ये इनडायरेक्ट ही है लेकिन इंडेक्सिंग किया गया है DPTR यूज करके. ए प्लस DPTR मतलब ए प्लस DPTR का कंटेंट मिलके जो एड्रेस तैयार होगा वो एड्रेस का डेटा ए में ट्रांसफर होगा. The content of A is added to the 16-bit register DPTR to form 16-bit address, and then from that address data will be transferred. In this program it will be clear. See, तो इस प्रोग्राम में आप देखोगे तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा what is given in this program. In this program, assume that the word USA is burned into ROM and the location address is 200. तो 200 वाले लोकेशन में आपने USA लिखा हुआ है and the program is burned into ROM starting from address 0000. Analyze how the program works and state where USA is stored after the program is run. तो पहले क्या बोला उन्होंने, डेटा कहां पे बर्न किया हुआ है, एड्रेस 200 पे. देखो आप नीचे दिख रहा होगा, ये है डेटा यहां पे, ये है डेटा org 200 पे गए, आपने माई डेटा करके वो डेटा सेव कर लिया उस 200 लोकेशन पे, वहां पे प्रोग्राम आपका खत्म होता है. तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. अब प्रोग्राम रन होने के बाद ये जो डेटा है ROM का वो कहां जाता है देखना है. तो आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया 00 से, फिर DPTR को इनिशियलाइज किया 200 क्योंकि ये अपना 200 वाला लोकेशन, एक्यूमुलेटर को क्लियर करके लिया. अब लिखा A कॉमा A प्लस DPTR. A 0 है, DPTR 200 है, तो एड्रेस बन जाएगा 200
यहाँ पे एड्रेस बन जाएगा 200। तो 200 एड्रेस पे है अपना U, but because U will take ASCII code of U will take 8 digits, S will take 8 bits and A will take 8 bits. So 200 पे लोकेशन है ASCII code for U. ASCII क्या है मीनिंग हमने देखा. So that code will be transferred to R0. Then you are saying increment DPTR. मतलब DPTR 1 से बढ़ गया. Now 201. फिर से A आपने क्लियर किया एंड आपने ट्रांसफर किया A प्लस DPTR, मतलब 201. नाउ द A प्लस DPTR विल बिकम 201 और वहां से डेटा जाएगा A में. A में डेटा गया S, ASCII कोड फॉर S एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन R1. तो देखो ये R0, यहाँ पे R1 और फिर से इंक्रीमेंट करके यहाँ पे R2. तो ये R2 का USA है ना, ये A वाला, ये डेटा ASCII कोड विल गो इनटू A. मतलब यहाँ पे हो गया 202. 202 में A ASCII कोड will go to accumulator and then R2. तो R1, R0, R1 और R2 ये तीन रजिस्टर्स में ASCII code for U, ASCII code for S and ASCII code for A will go. So this is indexed addressing mode that has been shown over here as well, right? So this is indexed addressing mode. So in the next program also they have given certain data here. Now this data they are transferring. Okay, that you can check the program how it is written. Now further, in many applications the size of program code does not leave any room to share 64K byte code space with data. एप्लीकेशन कोड ही इतना बड़ा हो जाता है तो इसकी वजह से another 64K bytes of memory space is set aside exclusively for data storage. मतलब ये एक्सटर्नल मेमोरी है और ये एक्सटर्नल मेमोरी अगर हम लोग लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल मेमोरी मूव एक्स ये इंस्ट्रक्शन से एक्सेस होती है. So move X, X stands for external. So move C and move X. Remember these are the two instructions which are used other than move. So it is move, move C and move X. Okay. So these are the ways in which data can be accessed. Okay. So you can use depending upon your convenience, depending upon the availability, we can use any of the addressing mode that is available. It's as per the user which addressing mode to be used. If it is asked in the exam, if it is given specifically ये addressing mode use करके दिखाओ तो आपको वो particular mode addressing mode ही use करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसमें आपको वेट कर मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर मोड ही यूज करना है कि कुछ जरूरी नहीं है, वो आप कर सकते. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. एड्रेसिंग मोड्स जो सीखने थे आज के लेक्चर में वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं. इट्स लेस देन अराउंड 50 मिनट्स. इट्स 9:20. So we took around 50 minutes to complete this. So next time, tomorrow when you come, please read these modes once again. Slides are there with you. So you go through the slides again and try to understand the examples given and come prepared tomorrow. Thank you.
So once again, those who are there right now in the lecture, attending this online lecture, give your attendance on the group. Give your attendance on the group. Mark your attendance on the group, please. Not here, on the group, WhatsApp group. Please mark your attendance on the WhatsApp group.